फ़ोन कर रहे थे और आप हैं इरफान के साथ। तरसी हुई नजरों को है दीदार की हसरत, बरखा की तरह प्यास बुझाने आजा, बरखा की तरह प्यास बुझाने आजा। लता मंगेशकर, आशा भोसले, इवन गीता दत्त के आने से पहले करीब 450 औरतें हैं जो गाकर जा चुकी। उसी तरह आपको मेल सिंगर्स में भी मिलेगा। आपको ये जानकर बहुत ही दिलचस्प लगेगा कि HMV या कोलंबिया रिकॉर्ड्स या पॉलीडोर या दूसरी कंपनियां, मतलब सब लोग पैरेलल म्यूज़िक के धंधे में थे, सिर्फ फिल्म म्यूज़िक के ही बल पे कारोबार नहीं करते थे। कि उसमें जॉनर्स क्या थे और कौन कौन सिंगर्स थे। देखिए किन नामों से वो जारी होती थी। उर्दू मॉडर्न, उस पर जैसे उसके जॉनर लिखा रहेगा, उर्दू मॉडर्न, कवालियाँ, हिंदी गाली, विवाह गारियाँ, भोजपुरी फोक, बिरहा, कवाली मुकाबला, भोजपुरी विवाह गीत, चैती मतलब ये एक लिस्ट है। और साहब गाते कौन लोग थे? शकीला बानो भोपाली, गुलाब बाई, हबीब पेंटर कव्वाल, रज़िया बेगम, राशिद हैरान कव्वाल, माया रानी दास और सहेलियाँ। ये लोग गए कहाँ? उनके बारे में बात कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि वो म्यूज़िक अवेलेबल नहीं है, जाहिर है कि वो म्यूज़िक ऑल इंडिया रेडियो के पास अवेलेबल नहीं है। कॉमन इम्प्रेशन है कि सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के पास बहुत सारे पुराने गाने हैं। देखिए ऑल इंडिया रेडियो के पास जो डे टू डे ब्रॉडकास्ट में ग्रामोफोन लाइब्रेरी इस्तेमाल में आती थी, वो ग्रामोफोन लाइब्रेरी रिप्लेस हो गई सीडीज़ लाइब्रेरी से। बीच में ये आइडिया था कि ग्रामोफोन लाइब्रेरी को डिजिटाइज कर दिया जाए और सर्वर पर सारे गाने डाल दिए जाएं। लेकिन वो एक बहुत ही एक दुख भरी कहानी है। वो पूरा डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट हाफ वे अबॉर्ट हो गया, किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर वो जो आप गाने बजाते हो जी, वो कहाँ से आते हैं? बेसिक पैशन और फेथ के साथ मैंने धीरे धीरे करके अपना आर्काइव बढ़ाया। बाद में जब से ये वर्चुअल प्रैक्टिस बढ़ी तो इससे थोड़ा सा और भी नेटवर्क बढ़ा। दिल ने फिर याद किया कि जो लिसनर्स हैं कि वो दीवानों की तरह मुझे प्यार करते हैं, तो इस तरह ऐसे लिसनर्स भी पूल में आए जो हमारे साथ अपना आर्काइव है उसे शेयर करते हैं। इस तरह से एक बड़ा आर्काइव इसकी वजह से बना। पर एक तरह से ये जो नेटवर्क है कि कलेक्टर्स अपना आर्काइव पूल करके आप तक पहुंचाते हैं और आप एआई पे बजाते हैं, इट्स एक्चुअली इलीगल, राइट? इट इज़ नॉट इलीगल इन दैट जो IPRS साइन हुआ होगा या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ऑल इंडिया रेडियो के पास शायद सारे म्यूज़िक के लीगल बॉन्ड है। कॉर्पोरेट रेडियो में ये हमेशा उठता है सवाल कि चलिए हम कर तो लें ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें पुराने गाने बजाए जाएं, लेकिन हमारे पास जो लाइसेंस है वो X ईयर से Y ईयर तक का ही है, उससे पहले का हम नहीं बजा सकते, उसके बाद का नहीं बजा सकते। म्यूज़ियम्स जिन चीज़ों को बचा रहे हैं उनको जनता नहीं बचाना चाहती, तभी म्यूज़ियम्स बचाते होंगे। और आप देखेंगे कि म्यूज़ियम्स भी इन चीज़ों को नहीं बचाते जिनको जनता बचा रही है। दरअसल है कि 89-90 के आसपास मैं कानपुर में कुछ पुराने रिकॉर्ड ढूंढ रहा था, तो उसमें ये मुझे लगा कि ये मेरे बचपन का सुना हुआ गाना था। रज़िया बेगम का गाया हुआ गाना है। लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, नसीबन तेरे लिए, नसीबन तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए।
सीना बहता होगा प्रथम प्रस्तुति ईश्वर वंदना। Don't speak. पीछे हटे। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, नीचे का भी सामान तुम्हारा है दोस्तों। तुम्हारा जिसने रखा है ना रंपत हरामी सही रखा, तुम हो भी बहुत हरामी। कोई परेशानी? लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, नसीबन तेरे लिए, नसीबन तेरे लिए। रंपत बदनाम हुआ रानी वाला तेरे लिए। ये देखिए भक्त प्रहलाद, ये धरोहर उत्तर प्रदेश की है नौटंकी। ये देखिए तो ये किसने लिखे हैं नाटक? श्री कृष्ण पहलवान ने, श्री कृष्ण पहलवान। ये इनका प्रेस था। जब आप कौन सी कंपनी में थे? कृष्णाबाई। कृष्णाबाई जो थिएटर चलाती थी, स्टेज पे हम लोग की मुलाकात हुई और वो आपस में प्रेम हो गया, आपसे शादी कर ली। पर जो पहले नौटंकी करती थी जैसे गुलाब बाई और ये सब आप जो कह रहे हैं, हाँ हाँ, उस तरह की नौटंकी तो अब नहीं होती। नहीं होती है, आज भी होती है नौटंकी। होती तो क्यों नौटंकी है, नौटंकी के नाम पे ही पार्टी चलती हैं। अब आप करें ना करें वो आपके परमिशन तो नौटंकी का मिलता है, परमिशन नौटंकी के नाम से मिलता है, डांस का नहीं नृत्य कला के नाम से नहीं मिलता है। आज जो लोग चाहते हैं, जो नई पीढ़ी चाहती है, उसके लिए हम लोग कुछ रद्द बदल कर देते हैं, बाकी एक स्टोरी वही होती है। तो आजकल की पीढ़ी क्या चीजें पसंद करती है? आजकल की पीढ़ी को डांस ही डांस ज़्यादा पसंद करती है। डांस ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लड़की हो लड़कियां चाहे चेहरा हो, मोरा ना हो, शक्ल ना हो, लड़की होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं हमारी इस लाइन से बहुत दूर हैं। ऐसा क्यों? नहीं हमने मेरे को रखा पसंद है। भाई, अब वो टाइम ज़माना नहीं रह गया कि हम लड़कियों को इस लाइन में डालें। हमने डाल दिया, उनका किसी से टच हो गया मामला, शादी ही कर लिया, लव मैरिज कर लिया, तो क्या करेंगे फिर? पर लव मैरिज तो आपने भी किया। वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग समझदार थे, हम लोग कलाकार थे। आजकल के बच्चे समझदार नहीं होते। इस तरीके की फिल्में आ रही हैं, इतने इतने कपड़े पहने, इतने अभी जो गाना आया मुन्नी तो बदनाम हुई, लड़कियों के आगे हम लोगों को कौन देखेगा? आज से 20 साल पहले हम लोग गाते थे, हम लोग फुल आज फिल्म कपड़े में डाल पहन के दिया जाते हैं, लहंगा वगैरह। और इसी गाने पे फिल्म चल गई। क्या आपने देखा था वो गाना? ये 20 साल पहले हम गाते थे गाना। उसकी पलट बनाए इन लोगों ने। बहुत पुराना गाना, हमें खुद ने मालूम किसने बनाया, लेकिन सुनते रहते थे, गाने लगे। तो जब आपने फिल्म में देखा वो गाना, आपको गुस्सा आया? अगर हम लिखे होते हैं तो गुस्सा आती कि देखो भाई हमने किसी से अच्छा लिया वाला हो, गाना इसको किसी खराब ने कर हमसे दिया ले लोगों ने। लिया। भोजपुरी जो है पहले हम लोग गाते रहते हैं और फिल्म वाले उसको देख के नकल कर लेते हैं, ये है। हमेशा? हाँ, कभी उल्टा भी तो होता होगा। कभी कभी हम लोग फिल्म से ले लेते हैं। हम भी उनके गाते हैं, फिल्म वालों के, फिल्म वाले हम लोगों के ले लेते, तो उनसे क्या? पर जो फिल्मी कंपनियां हैं वो कहती हैं कि अगर कि आप हमारा गाना गाओगे तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, आप यूं ही हमारा गाना नहीं गा सकते हो। आपको ये पता था? ना स्टेज पे कोई रोक नहीं है, आप किसी का भी गाना गा लीजिए। किसी का भी गा सकते हैं। जो चीज़ मार्केट बिक रही है, मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ मार्केट के अंदर बिक रही है उसको कोई भी किसी वक्त यूज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
The bazaar of the world is respectfully promiscuous. There is a shop for every kind of love, a song for every kind of lover. So who gave the monopoly to monogamy and made every other love a crime and painted every other market black? Who said there can be just one shop for songs? लाया हूँ सात डोली, प्यार से चलना है तो चल, वरना उठा के ले जाऊंगा। ये लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। जरूरत से ज्यादा उम्र है तुम्हारी, तो फिर इतने गुलफाम क्यों हो रहे हो? अरे जवानी में दिल को संभाला है तुमने, अजी बुढ़ापे में बदनाम क्यों हो रहे हो? अमित बदनाम हुआ ओ टीना तेरे लिए, अमित बदनाम हुआ ओ टीना तेरे लिए, अमित बदनाम हुआ ओ टीना तेरे लिए, अमित बदनाम हुआ ओ टीना तेरे लिए। Just got an index page where I try to update it every week mostly. It sourced the original songs from some vague place, I think on Napster. Back then it was Napster in 2000. I managed to download the original songs and also download the Indian version. There are enough songs that are inspired. R.D. Burman, S.D. Burman, O.P. Nair, Madan Mohan. No, but O.P. Nair used to blend it the Indian way. 56, 55. You know, I was in 9th class. We never had those, only the bulb radio, that's all. And when I used to tell people, I said, this is copied from Latin, this is copied from this Spanish. You see, the people never understood. I did not know this fellow will be so much interested, otherwise I would have kept it. What is the point of your website? Like, what do you hope to achieve by running this website? To be very frank, it's a very personal project. How many songs have you talked about in your website? About 600 plus. So, are all of them equally copied? No, definitely not. There are actually some which I can only say they have been inspired. And inspired is very different from copied. I would probably say inspired is a few bars and copied is probably note to note. There are composers who have done it very beautifully. There are great nuances which are added to it. You can't really find out whether is this a song copied, you can hardly believe it. Now, the only thing that needs to be done to add legitimacy to this whole act is to credit the source and probably pay the royalty. Unfortunately, the composers don't own the rights to either the CDs or even the whole soundtrack actually in India. If they actually claim in press saying that I have been inspired by this, the person who is most likely to be sued is actually the film's producer. And I don't think they will get work after that, because if the producer is sued, then this guy is finished. ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। Where there's a song, there's a story. So here's one. Once upon a time, a British firm called GCI came to dominate the Indian market through exclusive distribution agreements. It had a famous premium label, His Master's Voice, and soon HMV became the biggest record company in India with 90% market share. Then one day, a fruit juice guy called Gulshan Kumar opened a small studio with cheap cassette technology where he recorded unauthorized versions of HMV's Hindi film songs. And he too got a famous label, T-Series. HMV wasn't so happy. So one day, they decided to do something about their unhappiness.
And then T-Series became bigger than HMV, and HMV got married and changed its name to Saregama. And then T-Series thought, we're respectable enough now to file our own lawsuit. And that's the story so far. Whether it's radio, TV, whether it is disco, whether it is hotel rooms, whether it is lounge bars, anything, wherever music gets played, as long as it is not your private residence, you are required to obtain a license to play music. So whatever we collect, we distribute it at the ratio of 50, 30, 20, in the sense that 50% of whatever we collect goes to the music company as a publisher, 30% to the composer, then 20% to the lyric writers. But if the license is for the literary works, then why are music companies part of it? Even Saregama or others, they claim that we are 100% toners. In 93, after a lot of negotiations, that kind of an MOU was reached. The music company publishers became members of the society. So what percentage of the industry's companies are members of IPRS? I would say probably between 50 to 60, because T-Series, Yash Rajes of the world are not there. They say that they do not want to part 50% with the authors and composers. Who owns that song? Currently, it's owned by T-Series. When you want to play that song, T-Series want to charge you a lot of money. Correct. Now, does that seem fair given the fact that actually centuries of work went into making that song? Correct. But all copyrighted work is inspiration from society largely. I guess it is not only who creates it, but who records it and says that's mine. And the question is, can T-Series charge you lots of money to do it? Yes, it attempts to charge you lots of money to do it, but then piracy is a great leveler. So is T-Series part of the IMI? The T-Series is not a part of the IMI. Why is that? History. Do you think that the way the industry is organized right now, it's a fair and equitable organization? There's room for improvement. Elaborate. I guess there is a need to first find a way to monetize the work and then share it among all the stakeholders that are involved in the pie or who are involved in the process. Creators of work, the record labels, the investors. You need to take care of all of them, and that's a fair model that will operate. How do you get that to happen? Class wars have been a part of history. You'll have to live with it. You'll have to fight to change it. मैडम ये कौन है वैसे? अशफाक भाई आंखों पे करो। मेरे को इनका बैनर उधर भी लगा हुआ है। बैनर लगा हुआ है।
राइटर को ऐसा होता है कि एक कौड़ी के समान वेजेस मिलते हैं और डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर जो एक्टर्स है करोड़ों में लेके चले जाते हैं, तो उनके रेशियो में बराबर राइटरों को भी सही दाम मिले। जो राइटर गण मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं, जिनको के खाने तक के प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छे राइटर हैं जो कि बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। This place calls itself an industry, but it never functions like one. Every single right is purchased at some pittance by producers because the producer lobby is very strong. The individual writer feels very helpless. So essentially the program was to replace the helplessness of the individual screenwriter with the collective bargaining strength of the union. So it was important to regulate that relationship by having a model contract. So that is what has been drafted and negotiations are going on. Then the whole copyright amendment came about and we met with, in fact, the HRD minister to try and explain to him and take cognizance that it is important that screenwriters' rights should be specified. How do the producers respond to the things that you all are asking for? They don't respond very well. They don't take very kindly to this. And in fact, what happened is that when we proposed the model contract initiative to them, they were very reluctant. But when the copyright issue came about, the producers were very keen to agree with and discuss the model contract as long as we gave this up. But we weren't willing to give this up either, neither this nor that. कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सहित जला के भस्म कर देगी। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण। I take this opportunity to congratulate Vicky for launching this anti-piracy coordination cell. Can we articulate what intellectual property means and how nations who have today become larger and bigger and superpowers are riding on the wave of knowledge economy? There are pirates who do it for economic advantages, but there are a large number of pirates who do not have any economic stake at place. There have been parallel movements that our software should not be a sellable item, and there is an equally strong lobby of the free and open source software which talked about, not about copyright, but they talk about copyleft. When we go to police says, we have got more priorities like murders, etc. Why should we bother about your piracy? Anyway, to begin with, on hearing much of the criticism of the police, I would first like to take up this issue rather than taking up the main issue. Lately, police has been overburdened with certain duties which police should not be supposed to do. So somebody rang up, wife refused to give sex to the husband, they say call police. They called me. What I could do? Could I facilitate it? So your expectations are too high. You try to bring them down. You know, the intellectual property right actually creates a monopoly. There is a tendency to reap the supernormal profits, out of that IPR. And the tendency is to keep on reaping that profit indefinitely. If you are willing to share your profits, to some extent, I'm sure the piracy would go off its own. It will go because the economic reason will not remain. It's more socio-economic, it's not criminal. You can keep on raiding people. You have to meet the pirates in their own terms. They are going to adopt any means, and so also we, which will give them a strong message that, hey, honey, we are doing the same thing as you, don't worry. So Reliance, Mozabeh, Eros, UTV, and the Motion Pictures Association of America, we all got together
and made this alliance called the Alliance Against Copyright Theft. We pooled in huge amount of financial resources into it. We are companies and we are used to doing this. I would end my presentation today by saying, Itni shakti hame dena data, man ka vishwas kamzor hona. Thank you. गुंडा बनने के लिए डेंजर दिखना मांगता